As the fringe continues to spew venom and right-wing organizations behave as if they are above the law, Mirror now asks, does India need an armed Bajrang Dal force? And should the government allow such a parallel army to exist? वो ऐसे आप अपनी ट्रेनिंग कैंप के बाद आपने कहा आप एंटी नेशनल देशद्रोहियों को ठीक करेंगे। आप कैसे ठीक करेंगे? एयर राइफल के साथ ठीक करेंगे कि लाठी के साथ ठीक करेंगे? हाँ, सेना में भर्ती हो जाइए। ऐसे हट्टे कट्टे नौजवान हैं आपके साथ, सबको भर्ती करवा दीजिए सेना में। सब चला जाइए आप सियाचिन, वहाँ पे जरूरत है आप लोगों की। ये हर साल कैंप होता है, अभी भी कैंप लगा हुआ है। अच्छा, आप मुझे ये समझाइए, अभी जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको मई 2016 का है, इसमें ये सेल्फ डिफेंस लगता है आपको? और सामने जिसको मार रहे हैं, Why are they dressed like Muslims? Tell me. आप लोग जो अभी सेल्फ डिफेंस का क्लास चला रहे हो, स्क्रीन पे देखिए। They are teaching them. इन लोगों को टोपी पहनाया आप लोगों ने, आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को? बताइए मुझे। You know, if I may quote Mr. Bhagwat, who is the leader of the RSS, who said some time ago that I can train an army in 3 days, whereas the army takes 6-7 months to train a soldier. I mean, let's not compare a soldier to these people who are wearing knickers. The second thing which I completely disagree with this gentleman, that he says that the levels of violence and the level of activities have increased in the recent past, which is giving them cause for concern. I think the security situation is more or less the same. Perhaps the Modi government boasts that they've improved us on every index of governance in the last 4 years. So I don't know who to believe, whether the government of the day, which gets the support of people like this, or people like this who also look up to the government for their blessings. Can the BJP representative here, who is saying that the permission was taken, so can he tell that all these people have already been given arms licenses by his government? I'm sure, looking at the faces of these people, that most of them look like illiterate or semi-literate. Most of them look like unemployed youth. I don't think any government in its senses can give arms license to these people. Any arms training can only take place in a range, in a shooting range. And all shooting ranges in this country are controlled by the government. Rather, they are owned by the government. There is absolutely no private shooting range. We can see a school building behind it, and it cannot take place in a public place. ओवैसी ने जो बोला था ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसके कारण हिंदू ने भाजपा को वोट दिया है। भाजपा सरकार को भाजपा के वादों पे नहीं मिला। आज हिंदू संगठित क्यों है? बीजेपी की सरकार क्यों आ रही है? सड़क वगैरह के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं। अच्छा, तो आपको नौकरी नहीं चाहिए, आपको सड़क नहीं चाहिए, आपको घर नहीं चाहिए, ये सब आपको नहीं चाहिए? हमारा आत्मसम्मान चाहिए हमको सबसे पहले। अच्छा, आई एम अ पुलिस ऑफिसर ऑन द पैनल, लेट मी टेल यू, व्हेन ओवैसी सेज कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, इसका मतलब है कि वो जानता है कि पुलिस की ताकत क्या है। पुलिस की सक्षमता पे आपको विश्वास करना नहीं है, क्योंकि आपको इस देश में अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। मान लो आपके हिंदू धर्म ने इस तरीके से संस्कृति रक्षक बना लिए, कल अगर हमको मुसलमानों ने कहा कि हम भी ऐसे रक्षक बनाएंगे, सिखों ने कहा, पारसियों ने कहा, क्रिश्चियनों ने कहा, मेरी बात सुनिए, अगर सब ने कहा तो वो जो नारा आप दे रहे हैं, जिसका वास्ता देकर आप बात कर रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो जाएंगे, अरे मेरे भाई, भारत के टुकड़े करने में तो तुम मदद कर रहे हो। आप जो कर रहे हो आने वाली पीढ़ी बर्बाद कर रहे हो, और इसके जो नतीजे हैं हम आने वाले समय में भुगतेंगे। And the economic story that we are weaving to the world is going to suddenly turn to become a nightmare, because nobody is going to invest in a country which is going to see no law and order and the rule of law being flouted by gangs of people, whether organized or disorganized. And do we really in our country need a parallel army? I think we have a fantastic army of our own. We also have, for all practical purposes, paramilitary forces, state police and all kinds of other territorial forces to help us in case there's any trouble at all. Mr. Bajrang Dal, we don't need you. I will play a video that shows you. You've all seen this video of a brave cop protecting a young Muslim boy. Do you know what that young Muslim boy was doing? He was talking to a girl. If that brave police officer was not there, that boy would have perhaps not survived to see the end of the day. All that stood in the way was that one brave officer.
If we tell these hot-headed young men that the only way that they will get any sort of self-respect is if they hurt somebody else, they're going to go out and hurt somebody else. आज हिंदू संगठित क्यों है? बीजेपी की सरकार क्यों आ रही है? सड़क वगैरह के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं। हमारा आत्मसम्मान चाहिए हमको सबसे पहले। अच्छा। हमारा आत्मसम्मान चाहिए हमको सबसे पहले। अच्छा। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। Big thank you for being here.